जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। सद्गुण से श्रृंगार करें हम, करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाएं, प्रेम का पाठ पढ़ाएं। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाएं। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताएं, हम प्रभु संदेश सुनाएं। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाएं। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। मानव होगा।
ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. गुड मॉर्निंग। Good morning. आज प्यारा बाबा हम बच्चों को आज की मुरली में विशेष 2 बातें सुना रही है। Today, Baba is speaking about 2 things एक तो in बाबा today's mood. हम बच्चों को आकर के Firstly, Baba comes ये स्मृति दिलाई and gives us the awareness कि तुम वास्तव में क्या थे, that actually, who are you? कितने सुखी थे, How much happy you were. देवता थे, You were deities. जीवन में खुशियाँ थी, There was happiness in your lives. हर रीति से भरपूर थे, You was full of ये everything. प्राप्तियों की बाबा ने हम बच्चों को स्मृति You दिलाई। were full of everything. And बाबा Baba कहते हैं has reminded कि us जो of our आपसे प्राप्तियाँ attainment. होती हैं Attainment उन स्मृतियों को we experience from the बुद्धि में Father. रखकर We have to सदा keep खुशी में रहो, these attainments in our intellect and always remain happy. क्योंकि खुशी तब आती है Happiness will come when जब प्राप्ति होती है, and there is attainment, कमाई होती है, there खुशी is income, and there अगर is प्राप्ति happiness. नहीं है तो If there is no खुशी attainment, नहीं। there is no happiness. इसलिए जो प्राप्तियां हैं, जो बाबा ने हमको स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों को बुद्धि में रख करके जितना उनका सिमरन करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। The more we chant attainment we have दूसरी received from बात Baba, बाबा ने कहा the more there will be happiness. कि बच्चे, अब तुम बच्चों को जो पाया है दूसरों को Baba says, whatever you have attained, you have to share, give to बड़े others धूमधाम से with great pomp. सेवा करो, But to do service with great pomp. जिसमें बाबा विशेष बड़े बड़े हॉल लेकर के सेवा करो, Baba today is speaking about taking एक शहर big के halls एक एरिया में where बाबा you ने can 8 have 10 lots of exhibitions. तो एक साथ करने से क्या होता है, आवाज होता है। बाबा ने कहा When you hold exhibitions all together, the sound will spread. जो भी बाबा के रहे हुए बच्चे So it is the duty of आत्मा whom वर्षा देने के लिए आया, to लेकिन दिलाने का कार्य give to others, to us children. And how हमें to देना भी है take दूसरों को, and also give. दिलाने के लिए बाबा कहते हैं अच्छे बड़ों बड़ों को क्यों बुलाओ? Baba says, invite कई लोग ये eminent people. तो There are those who say हैं? that we serve बड़ों की eminent सेवा का people, those wealthy दर्शन people. बाबा ने दिया है, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।
There is no selfishness behind that. बड़े होते उनका अनेकों से कनेक्शन होता है So, eminent people और उनका have प्रभाव their connection with many, ऊपर पड़ता है and they कोई बड़ा आदमी आता have है influence upon कोई others. प्रसिद्ध आता है तो उसका प्रभाव पड़ता है कि भाई जरूर कुछ वहां पर होगा They would say, जो ये definitely, जाते हैं there is something there, so महिमा that करते हैं eminent people इसलिए हम कहते have हैं gone there. एक से अनेकों की सेवा हो इसलिए बाबा कहता है कि Why Baba says, उनको through समझाओ one, let there be service of यूज करो many. तो सर्विस करो क्योंकि सर्विस करने का समय अभी है और बाबा से जो मिला है उसको सिमरन करके खुशी में ये खुशी भी हमारी सेवा करेगी Our happiness जितना also खुशी में रहेंगे will do the service. उतनी सेवा बढ़ती जाएगी The more we are happy, the more service increases. Murli of the आज 22nd of 22 तारीख की मुरली August. मुरली का सार है मीठे बच्चे Sweet children विशाल बुद्धि बन have unlimited intellect. बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले Seek the opinions अनेक आत्माओं of का कल्याण eminent people and benefit. उनसे Also, लेकर ask them for their halls प्रदर्शनियां लगाओ to hold lots of exhibitions. प्रश्न है Question is, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होगे by having with awareness now, उत्तर है will you never become अभी unhappy? स्मृति आई है कि हम Answer is, जीते you have now become aware आप कहना चाहते that you were worthy of worship, king, हैं and that you then became और फिर beggars. से बाबा हम बच्चों को Baba has come and he is once again making you into kings. हमें सारे विश्व का समाचार Baba is now telling you हम the वर्ल्ड news हिस्ट्री of ज्योग्राफी को the जानते हैं whole world. इन्हीं स्मृतियों का सेवन करते रहो You know, तो you कभी have now come to know दुखी नहीं the history and geography of the world. सदा खुश Continuously have this awareness and you will never feel आज की unhappy. होली का गीत है You will remain constantly happy. नैनहीन को रहा The song is Show the Path to the Blind, Dear God. ओम शांति Om Shanti, मीठे मीठे you sweetest, सिक्की लते long lost and now found. रूहानी बच्चों ने गीत सुना Spiritual children heard the song. बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना Your children understand सहज that it is very easy to meet the आया ही Father जाता है and to receive बाप your से inheritance एक सेकंड from Him. It is remembered बुद्धि का वर्षा that you receive मिलता the inheritance of liberation in life मुक्ति माना from the Father in a second. सुख शांति संपत्ति का वर्षा Liberation in life means बाबा से the मिलना inheritance of है happiness, सुख peace, शांति
and prosperity, संपत्ति etc. का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध दो अक्षर बच्चे जानते हैं। इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण There are the two सब terms, जीवन बंध में liberation in life and bondage in life. You children know जीवन बंध में क्यों है? that everyone रावण राज्य has के कारण a life of bondage at आप this time जाकर बंधन से because मुक्ति करते हैं of the path of devotion और and the वर्षा kingdom देते हैं। of Rama. जैसे बच्चा जन्मा Father comes and liberates और you माँ बाप from पिता that संतान bondage आदि and gives you समझ the जाते हैं inheritance. कि ये वारिस पैदा हुआ है। जैसे ये समझना सहज है वैसे वह भी As सहज soon as the child is बच्चे born, कहते हैं his बाबा parents, अल्प friends, पहले and मुझसे relatives all आप understand that हमको आकर an के heir has मिले। been born. आपसे ही It सहज is just as easy to understand this रास्ता मिला है। as it is to ये तो understand हरेक that. जानते हैं Children say, सृष्टि Baba, नई सृष्टि you का have come विजेता and met us exactly भगवान ही है। as you did वह in हमको the क्या previous करता है? cycle. We have found शिव the बाबा क्या path करता है हमको? to receive the inheritance नॉलेज easily समझाता from है। you. वह हमको भटकने से बचाता है। पहले क्या था? बहुत भटकती Everyone knows that the creator of the new world is God, प्राप्ति होनी चाहिए। liberating us from wandering around. प्राप्ति की। इसलिए क्या करते थे? अभी जब तक संतुष्टि नहीं होती है तब तक इंसान क्या करता है? भटकता रहता है, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। वही चाहता है तो फिर Yesterday, we were doing devotion. तो बाबा कहते तुम बच्चों का अभी क्या हो गया? भटकना। Whereas today, we have found भटकने से the बचाओ। path of this easy knowledge and आज बाबा Raj ने Yoga. ज्ञान और सहज राजयोग का वर्षा मिला है। आज और कल क्या करते थे? भटकते थे और आज बाप से वर्षा। Some children relate the experience of how they heard क्या सुनाते अनुभव में? from the Brahma Kumaris how बच्चे having two fathers. कि हमने के द्वारा सुना है कि दो बाप है? दो बाप है कि तीन बाप है? तीसरा बाद में समझाना, पहले दो ही समझाना। जब दो समझ जाए तो फिर तीसरा समझाना। No one apart from पहले you तीसरा समझाने could say that he has two fathers. इसलिए बाबा कहते पहले दो समझाने। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि दो बाप है। तुम्हारी हरेक Every बात aspect wonderful of yours is wonderful. एक एक बात क्या है? वंडरफुल। अभी स्मृति में आता है You are now जो aware यहाँ के होंगे that those who belong here स्मृति में will आएगा। very quickly ज्ञान be able to remember all of these things. हाँ Yes, स्मृति में आए sometimes वो भी Maya क्या होता है? even slaps hard स्मृति आ जाती those है। who had remembered everything माया को by हृदय में making them से थप्पड़ forget लगा everything. विस्मृत कर देती है। जिनको स्मृति आ गई, बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, फिर कभी कभी उनको माया आती है तो क्या कर देती है? विस्मृत कर देती है, बाबा की याद नहीं करते। Your children have to remain very cautious about this. स्मृति तो बाप ने दिलाई
दिलाई है, स्मृति बाबा ने दिलाई और पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। The Father बाबा ने स्मृति दिलाई, अभी बाप को याद करना है, माया से बचना है और साथ साथ पवित्रता का कंगन The Father has reminded you पूरा बांधना है। of everything. You have to tie the bracelet of purity very tightly. तो अभी तुम You now understand the significance of ये प्रतीक Raksha Bandhan. Who made you make this promise? की बांधी गई ना भट्टी वालों को, तो किसने बांधी? Lust बाबा ने बांधी। is the greatest enemy. बाबा से सबने पक्की प्रतिज्ञा कर ली Father says, है, promise me बोली ना, that हाँ नहीं बोल रहे, you will never become impure बाबा पक्की प्रतिज्ञा की है। and that प्रतिज्ञा में हम you will continue to remember me, and then your sins जिसने ये प्रतिज्ञा of half this cycle तो महाशक्ति will be burnt बाप कहते हैं, and destroyed. मेरे साथ प्रतिज्ञा करो तो कभी भी पतित नहीं बनो। The Father मुझे याद कर guarantees this. तो आधा कल के बाद You children also understand that since बाप गारंटी करते हैं, it is the Father who is giving this guarantee, it must be fine. है, फिर कभी भी माया के वश नहीं होंगे। What guarantee जो भी do तुम्हारे पास goldsmiths give? ये गारंटी बाप गारंटी They say that they will make all jewelry new. बाप गारंटी कर That is their work. बात ठीक है। सोना गारंटी भी क्या When it's put onto a fire, it definitely becomes pure gold. कि हम पुराने Therefore, the Father explains there is alloy in souls. जेवर नया बनवाने जाते हैं, पुराने को How you go बाबा भी through the stages इसके पास of Sato, Rajo, ना जेवर and Tamo is very easy to explain. नया बनाए, उनका तो काम ही है The pictures have been made आग में so that डालने से जब it is also easy to explain by using them. तो बाप समझाते हैं, आत्मा में खाद पड़ी है, कैसे They have बच्चों तुम many types of maps in universities and colleges. बनाई है, These are पर your से maps. समझा सके। You can explain to someone very well. नक्शे होते हैं, अनेक प्रकार के The ocean of knowledge, नक्शे हैं। the purifier Father, comes and shows you this path. रीति किसको भी No one else can make an impure person pure. सागर पतित पावन आप ही Human beings आपका are without sight और कोई and पतित are को पावन unhappy. बना सके। You children know दीन दुखी मनुष्य that for the first 2 ages there is no sorrow or devotion. That is heaven. पहले 2 युगों में दुख नहीं होता, सतयुग और That is the contrast between the people of Bharat of this time and the ancient people of Bharat. है तो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, इस समय के मनुष्यों का और प्राचीन देवताओं का However, कंट्रास्ट no one else understands this. क्या थे, They do so much worshipping, परंतु etc. और कोई समझते नहीं। The ancient people of इतनी Bharat पूजा चलती है, जितना जो शाहूकार होते हैं
उतना देवी देवताओं को अच्छे there is so much, they do so much worshipping, etc. बाबा खुद The wealthier people are बाबा the most बड़ी थे ना तो बाबा खुद अनुभवी है beautiful. लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है The wealthier people are, the more beautiful are the ornaments they put हीरों का हार बनवाया on the idols of the deities. बाबा ने बनाया बाबा को Baba is experienced, नाम भी याद है a trustee जिसने बनवाया of the Lakshmi and Narayan temple in Bombay, बाबा का मंदिर had a diamond necklace made सजाया for Lakshmi and Narayan. तो लक्ष्मी नारायण Baba still remembers the name of that trustee. उस समय कितना He first built a temple to Shri Baba मत गजनबी कितना and decorated it very beautifully. कहते ना 18 बार And he then built a temple to the deities and decorated Lakshmi and Narayan, etc. with so much jewelry. कितना सोना How much wealth there would have been at that time. तो सोना Muhammad Ghaznavi came हो गया है and looted camel loads of it. बाबा ने कहा भारत में कितना धन There was so much wealth in Bharat. समझते You now understand accurately what your Bharat हमारे was. भारत में याद करो There were हमारे भारत में unlimited treasures कुबेर का खजाना in our Bharat. अथाह खजाना था हीरे जवाहरों के मंदिर बना अभी वह Sorry. चीजें नहीं सब लूट कर ले गए अभी तो क्या हाल हो They used to build temples of diamonds and jewels. फिर तुम Those things don't exist anymore. लेकर Everyone has looted everything. Look ऐसी what the condition has now become. घड़ी घड़ी सिमरन You were worthy of worship, kings, and now, तो फिर कभी भी तुम अपने को having completed your 84th birth, गरीब हैं you have become complete beggars. Churn these things over and over again, करो क्या and you will then never consider yourselves का थोड़ा बहुत to be भी unhappy. क्या होगा फील नहीं होगा Continue कहते कभी to churn को दुख in your hearts what you are receiving from Baba. Father comes से and tells us the news of the whole world. दे बाबा से क्या ले रहे हो क्या No one knows the history and geography क्या बाबा of this से world. क्या मिलता है वो लिस्ट बनाओ सामने रखो You know बाबा के बने that there was only में the one dharma, religion, क्या मिल one kingdom, one direction, and one language, से क्या ले रहे हैं बाबा and everyone was happy at first. बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार Afterwards, they began to fight among themselves, सारा समाचार सुनाते and Bharat began to be divided into pieces. तुम जानते हो पहले एक धर्म एक It was not like that at first. It wasn't like that at first. There was no type of sorrow there. होने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने There was no mention of illness. पहले ऐसे नहीं था The very name is heaven. कोई किस्म का दुख नहीं था बीमारी का नाम नहीं था उसका नाम ही You है have now remembered everything about तुमको yourselves. भी आई है We truly forget everything every cycle, होती है फिर तुम and then we remember everything. भूल है कौन सी एक The first and only mistake we made जो was to forget रचना को the Creator and creation. स्वयं को भी भूले और स्वयं
स्वयं के बाप को भी रचता और रचना को भूले। ये एक ज भूल की। अभी तुम आज मध्य अंत को जानते You now know the beginning, नॉलेज the middle, and the end. परंपरा से कैसे चल This knowledge will not even exist in the golden age. ही होते So how could it have continued थोड़ी होते from time immemorial? तो द्वापर से आते At that time, the main ones are the kings. वो तो द्वापर से आते They are not ऋषि मुनि any rishis or munis. राजाओं से मिल Then राजा they come into existence in the copper age. The rishis and munis receive their food, etc. from the kings. प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे सुना प्राचीन The kings looked after them because, नहीं कहेंगे after all, they renounce everything. वह राजाओं के The, आधार the ancient Rajyog of ancient Bharat और रचना is remembered. जानते बाप कहते ये खुद राजाएं भी नहीं जानते किस You will not say that the rishis and munis are ancient. They come into existence in the copper age. They are supported by the kings. समझदार They say, we do not know the creator or creation. Father says, the kings do not know that either. मंदिर बनाए No one in the world has this knowledge. कहानी को तो जानते Your children have now become sensible. तो जीवन कहानी भी जाननी चाहिए ना You can write to those who build temples to अपने राज Lakshmi and Narayan. कहाँ चले गए You have spent अभी so many hundreds of thousands of rupees खास बता सकते on building temples. ऐसा उनको लिख सकते But do you know their life stories? हैं कि जीवन कहानी को जान How did they attain their kingdom? लिया ना सब And where did they go then? भी जानी And where did they then go? We can tell you all the secrets about करना चाहिए where they are now. हमको टाइम दो तो हम You can write to them like this. बताएं शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो बनारस में Your children now know the biography of everyone. लोग होंगे So why should not you write to them? Say, बड़ों को give us some time and we will tell you the life story of each one. You can even write to those who build temples to Shiv. गरीब लोग झट सुन The temple to Shiv बड़ों की in Benares is so large. ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है क्योंकि उन्होंने It must have trustees. You should try to explain to eminent people. When eminent people understand, समझाना चाहिए their sound will be heard by everyone. में मदद करता है इसलिए वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं है The poor quickly listen to them. Seek the help of eminent people. प्रेसिडेंट को भी Get them to write their opinions because their voice helps. भी कहते हैं In fact, they don't make as much noise as they might. करते हैं You even explain to the president. लिखते हैं ये बीके बहुत अच्छा They even say रास्ता ईश्वर that से this is good. When a chief minister or a governor performs an opening, they write ये कुछ that these Brahma Kumaris show a very good समझे and easy path to meet God. हाँ कह देंगे However, अच्छा करते हैं they don't understand who God is. उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है At the time, they just say that the path you show का मार्ग अच्छा है is very good, परंतु खुद that the नहीं path to find peace अगर खुद is नहीं भी very good, तो उसको देख करके क्या होता है देखो but they don't understand anything themselves. होता है अगर गांव का एक मुखिया Baba tells you तो उसके पीछे
to explain to eminent people. इसलिए एक को पकड़ा तो सारे को पकड़ लिया ना, इसलिए बाबा का Ask पावर for very well-known halls with the help of important people. बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते, Tell them, बड़े बड़े we want to keep this exhibition here permanently in order. अब बड़ों को समझाएंगे तो और भी दे देंगे ना सेवा के लिए। बोलो हम सब मनुष्यों Tell them, we want to keep this exhibition here permanently in order to benefit all human beings. एडवर्टाइज Simply advertise this. 50 या Take 50 हॉल लेने चाहिए। to 100 halls like this. भारत तो बहुत बड़ा है, Bharat is very big. में 10 Take 10 हॉल to 12 halls in each city. अभी तो करते हैं ना सेवा Have it printed in the newspapers करते, that नशा exhibitions है तो सारे are being held विश्व में क्या चल in रहा so many halls. है, नशा मुक्त Those who want to understand वही चल रहा है ना, should आवाज come होता है, and do so. एक ही साथ में सब करते हैं तो आवाज होता है। अभी So many will then be के बच्चे benefited by this. सब साथ में सब सेंटर्स मिलकर करते हैं। अभी You शिक्षा children भी आती है तो सब have to have जाते हैं। very broad intellects. Your children have to do service. सेवा भी पढ़ रही है Father says to all of you children, ना, अभी तो all exhibitions with great pomp ऐसे ऐसे से and show. अखबार में Baba is making preparations. प्रदर्शनी हो रही है, You children have to make effort. जिनको समझना है All of these things have to be understood. कल्याण हो जाए। God comes and creates बच्चों को the creation of people through क्या बनना चाहिए? बाबा कहता है Prajapita Brahma. विशाल बुद्धि Therefore, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। Therefore, he must definitely have created so many Brahmins. प्रदर्शनियां बहुत जोर He is now creating them again. क्या कहते बाबा, प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा प्रदर्शनियां की, मेले किए, हाँ किए कि नहीं किए? बहुत जोर शोर से किए, धाम धूम से किए, There are so many Brahmins. लगा लगा के Baba is creating this Brahmin Dharma तैयारी करा at this confluence age. कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की You can see and understand all of these things in a practical way. द्वारा रचना रचते These things are not mentioned in the scriptures. ब्राह्मण रचे You children understand that Baba only comes when this impure world has to be made pure. धर्म रचते हैं People also know संगम पर। that the Supreme Soul creates creation प्रैक्टिकल through देख रहे हो, Prajapita Brahma. ये बातें और कोई शास्त्र But they don't know when he does that. तुम बच्चे समझते हो। They believe बाबा that he must create हैं, a new creation. जब They believe Brahma को to be in the subtle region. होता है। You understand that Prajapita Brahma is now here. पिता ब्रह्मा द्वारा You know, रचना you go to the subtle region, रचते हैं, you become pure, समझते and then become angels. समझते हैं, कोई नई रचना रचेंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो। You also have visions. Children, come back सूक्ष्म and relate. यहाँ Sorry. तो यहाँ भी है, वहाँ भी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। Children, come back and relate वतन में जाते हो, that everything there is a movie. करके क्या बन जाते हैं? That is the movie world. साक्षात्कार You saw movie films. पवित्र You बन know, फरिश्ते बनेंगे। understand everything in a practical way. बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है,
The incorporeal world is a world of silence आवाज नहीं है where souls reside. ये इशारों से बात कर In the subtle region, there are subtle bodies. वह है ही मूवी बर्ड So there must also definitely be a language. पहले सिनेमा मूवी चलते थे It is in the intellects of you children सब बातों को that the residence of you souls is the land of silence. साइलेंस वर्ड Then there is the subtle region where Brahma, तन में सूक्ष्म Vishnu भी है and Shankar reside. तो जरूर कुछ भाषा Here, होगी it is the confluence of the Iron Age सूक्ष्म वतन में क्या है सूक्ष्म शरीर and the Golden Age. का शरीर दिखाते हैं Father comes here बोलते नहीं and you Brahmins then go from here. तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर That is the home तो of the जरूर parents भाषा भी हो and the home of the in-laws. में है Both of your parents are here. शांति धाम और फिर है Both Bap and Dada make effort to make you children become कर रहे like ये flowers. है कलयुग और सतयुग का संगम यहाँ बाप आते Muslims speak of the garden संगम पर of Allah. बाप आते There was someone in Karachi who would stand in front of Baba and fall down on the ground simply by looking at Baba. When he was asked about it, कहाँ जाते he would say, पियर घर और ससुर घर पियर घर he would say that he went to God's garden ससुर घर and God gave him a flower. वैवाशी बाबा नहीं होता He है had none of this knowledge. स्वर्ग में You now understand what the garden is. पियर घर किसको कहा जाता है जब This is a forest of thorns, नाम है पियर घर and that is a garden of flowers. पियर घर और ससुर You have all of the secrets तुम्हारे पियर in your intellects about देखो what this Iron Age is and what that Golden Age is. शांति धाम और अभी संगम पर भी You should have a lot of happiness ये हमारा पियर घर है बाबा साथ में है because you have the whole cycle है in your intellects. हुआ ना डबल पियर घर ये ब्राह्मणों का आत्म घर है There is a lot of expansion about it. ये दोनों तुम्हारे पियर है बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं देखो It is in your intellects. माँ बाबा भी In मेहनत short, करता है, वो भी तो हमारा बाप है you children have now come to know बच्चों the Creator and creation from the Father, the Creator. मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कराची Brahma पठान is not called था the Creator. सामने खड़ा होता था There is only the one Creator, and the greatness is also of that one. हम खुदा के बगीचे में गए First of all, साक्षात there is the creation through Brahma. फूल दिया अब उसको ज्ञान तो था नहीं अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है ये तो कांटों का जंगल है Brahma is not called the Creator. बगीचा There is only the one Creator, and the greatness is also of that one. राज है First of all, क्या है कलयुग there is the creation through Brahma, खुशी होनी चाहिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों and then there is the creation of Shri Krishna. आपकी खुशी होनी चाहिए Brahma exists, but Brahmins are also needed. तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए क्या खुशी होनी चाहिए Pandav are not called Brahmins. Brahmins created through Brahma are needed. तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए This is सारा a spiritual तुम्हारी बुद्धि sacrificial fire. है ना This is called चक्र
तुम्हारी बुद्धि में spiritual आदि knowledge. मध्य अंत तुम सब जानते हो। Only the Father gives विस्तार this से knowledge है। to you. तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा Only the Father gives this knowledge to you, spirits. शॉर्ट में बिठा दिया You understand that it is not सुमा दिया a human being who is teaching you. को रचता बाप Father द्वारा is teaching रचता all of you souls. ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। Sorry. रचता एक है। It is said that establishment takes place through Brahma. पहले रचना ब्रह्मा की, फिर कहेंगे You cannot say that it takes place ब्रह्मा तो है, through ब्राह्मण भी Sri Krishna. That would not be possible. ब्राह्मण नहीं कहेंगे। है भाई, पांडव कब है? Who inspires establishment through Brahma? Is it Sri Krishna? ब्रह्मा द्वारा No. ब्राह्मण चाहिए। It is the Supreme Father, the Supreme Soul. इसको इस Sustenance knowledge का takes place through रूहों को Vishnu. ज्ञान वही बाप ज्ञान Brahma and Vishnu जानते हो। also have their parts. हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते। स्वयं The mouth-born creation of Brahma then become the deities of the land of Vishnu. कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। Brahma श्री becomes कृष्ण Vishnu थोड़ी कहेंगे। and Vishnu है तो हो becomes सके। Brahma. ब्रह्मा द्वारा स्थापना It has been explained to you children क्या श्री कृष्ण that it takes a second पिता परमात्मा for Brahma ब्रह्मा to द्वारा become स्थापना Vishnu कराते। and that it then विष्णु द्वारा takes 84 births for Vishnu to become विष्णु का Brahma. कितना पार्ट है? These are such विष्णु का wonderful matters. कितना पार्ट है? No one can understand them. They are भाई ब्रह्मा का पार्ट unlimited matters. एक जन्म का और विष्णु का पार्ट 84 जन्मों का। You have to study कितना पार्ट है? this unlimited study with the unlimited Father विष्णु के देवता बनते हैं। and claim विष्णुपुरी के that देवता unlimited kingdom. ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। Know the world cycle. वो You souls know it through your bodies. ब्रह्मा सो विष्णु बनने में It isn't सेकंड that your bodies ब्रह्मा बनने take this knowledge through you souls. No. It is you souls who take this knowledge. कोई भी समझ ना सके। ये बेहद की बातें हैं। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य। You have so much happiness. You should have internal, incognito happiness. ऐसे नहीं कि शरीर You souls have the sanskars of studying. It is the soul that feels sorrow. को कितनी खुशी It is said, don't cause sorrow ये आंतरिक to my soul. खुशी होनी चाहिए। You children are now receiving so much enlightenment. दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी You remain happy. मत करो। You souls को अब कितनी रोशनी have to become मिल refreshed by the ocean and shower this knowledge together. खुशी रहती है, रहती है, रहती है। Meet together and help to create देश हो, these बादलों को exhibitions. बरसानी है। सुना बाबा काम दे रहा है। आप You should be बादल interested आए हो, in doing this. जाकर फिर क्या करेंगे? बरसेंगे ना? वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद You should be interested in doing this. शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक होना चाहिए, समझाने का
शौक होना चाहिए। service, फिर क्या कहते हैं? service, and more शौक service. होना चाहिए। हैं? सर्विस, सर्विस, बस सर्विस। लास्ट क्या कहा बाबा ने? सर्विस, सर्विस, सर्विस। अच्छा, अच्छा, मीठे 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 सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। Essence or inculcation. First point. आज की मुरली से धारणा Turn this knowledge that you have received from the Father बाप and maintain infinite मिली हुई happiness. नॉलेज का सीमित Have an unlimited intellect अपार खुशी and do service with great pomp and show. विशाल बुद्धि Second point. Don't forget the awareness that the Father has reminded you of. द्वारा मिली हुई नॉलेज का Completely और अपार खुशी fulfill the promise that you made to the Father to remain pure. Blessing is, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे may you constantly be an easy yogi में नहीं लाना। who grants a vision of an angelic form with your practice of remaining detached. Just as it is in your hands to wear a garment or not wear it, in the same way, have the same experience with the garment of your body. You wear a costume to perform a task, and as soon as the task is accomplished, you take off the costume. फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने Experience the detachment of yourself, the soul, and your body while walking से कोई and moving around, धारण and you will then be called a constantly हाथ में easy yogi. ऐसा Many souls will have visions शरीर रूपी of your angelic form and your future वस्त्र को royal status through कार्य किया the children who remain detached in this way. वस्त्र से न्यारे At the end, this type of service और आगे will make दोनों का an impact. चलते फिरते अनुभव Slogan is, to waste और आगे even a second of the confluence age means अनुभव to waste a year. ये निरंतर Avyak signal. Finish the seed of impurity बच्चों द्वारा and become completely clean means रिश्ते रूप pure. और भविष्य राजपद के साक्षात्कार In order to experience the natural inheritance of Brahmin life, which is constant happiness, है being an embodiment of peace and having contentment of the mind, there has to be purity of your mind. The way to accumulate this is to have purity in your thoughts, words, and actions. के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो स्पष्टता है The foundation is purity. आंतरिक वर्षा The basis of success in service is also purity. मन की संतुष्ट Let there not be any other feelings mixed के लिए in your thoughts or words. Let there be purity in your intentions मनसा वाचा and also in your feelings. फाउंडेशन Om Shanti. Thank you, Baba. सेवा में सफलता का आधार भी क्या है? पवित्रता है। संकल्प व बोल में भी और कोई भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता हो।
दादी जी की विशेषता है, भावना में कुछ गड़बड़ है तो नुकसान अपने को ही है। देने वाला दे रहा है, लेने वाले को सिर्फ स्वच्छ बुद्धि से लेना है ना। बाबा दे रहा है लेकिन लेना कैसे है? स्वच्छ बुद्धि से। तो भगवान के महावाक्यों को स्वच्छ बुद्धि से धारण करना है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो अंदर ज्ञान जाता नहीं है। इसमें देने वाले दाता का दोष नहीं है, लेने वाले का है, क्योंकि इतना अक्ल नहीं है जो मलिन बुद्धि की सफाई करे। क्योंकि जरा भी मैलापन है तो भगवान का प्यार नहीं मिल सकता। तो जो बाबा ने मुख से बोल उच्चारण किए वही दादी ने किया और कराया, इसलिए हम सब सुखी हैं। तो ना जो बाबा ने कहा वो दादी ने कराया, इसलिए हम सब सुखी है। सुखी है ना? हाँ। ओम शांति। ओम शांति। सुदेश दीदी लंदन से वीडियो मैसेज भेजे हैं। 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, तो अनाउंसमेंट्स के तुरंत बाद वो वीडियो मैसेज हम सभी देखेंगे और सुनेंगे। और भट्टी में जो भाई बहनें आए हैं और सौगात नहीं ली है अभी तक, जो पहले दिन स्वागत के दिन में सौगात दी गई थी, तो जिन्होंने सौगात नहीं ली वो थोड़ा हाथ उठाएंगे। हाँ, अभी वीडियो मैसेज सुनने के बाद, योग के बाद अभी स्टेज से मिलेगा तो ज़रूर आप यहाँ से ले लेंगे। और आज सुबह 10:30 बजे पांडव भवन में, पांडव भवन ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल एवं पीस पार्क के कर्मचारियों के लिए दादी डे के निमित्त ईश्वरीय सौगात एवं ब्रह्मा भोजन रखा गया है। अतः सभी डिपार्टमेंट वाले, ज्ञान सरोवर निवासी डिपार्टमेंट वाले अपने कर्मचारियों को 10:15 बजे तक छुट्टी दे देंगे, ताकि फिर 10:30 बजे की बस से वो पांडव भवन जाएं। और बीके गाइड्स अपने ग्रुप के वापसी यात्रा का समय, डेट और समय आज ही ट्रैवल ऑफिस में ज़रूर लिखाएं, जिससे अपने ग्रुप को समय पर बस या टैक्सी की सेवा मिल जाए।